व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। हमारे लिए ये रीजन एक और कारण से भी अहम है। लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और वहां काम करते हैं। वहां समंदर में जो कमर्शियल शिप चलते हैं उनमें भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। जाहिर सी बात है, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है, जो टकराव है, जो युद्ध है, उसके चलते कई सवाल हैं, कई मुद्दे खड़े हैं। शशांक मणि जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। प्रधानमंत्री जी ने आज भारत का जो रुख है उसे स्पष्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज लोकसभा में वक्तव्य दिया है उसका क्या संदेश है, क्या मायने हैं उसके? एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य खुद ही एक संदेश है, क्योंकि उन्होंने जैसा बताया, पहले हमारे जयशंकर जी ने और उसके बाद हरदीप पुरी जी ने इसी विषय पर वक्तव्य दिया था। लेकिन यह अब बहुत व्यापक युद्ध हो गया है और उसके लिए मेरे हिसाब से पूरा विश्व और भारत भी बहुत आहत में है और इसके लिए उनका वक्तव्य देना खुद ही एक संदेश है। लेकिन उसमें जो 3 प्रकार की चीज़ें उन्होंने कही, एक तो मानवतावादी जो चीज़ कही, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये ह्यूमनिस्ट क्राइसिस है और उसी के साथ साथ एक आर्थिक और एक सिक्योरिटी क्राइसिस भी है। और तीनों विषयों पे एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनका कहना बहुत मजबूती से इस बात को रखता है कि हमारी सरकार इस विषय को बड़ी गंभीरता से ले रही है। और आपको जानना होगा कि कल ही रात को उन्होंने एक सीसीसीबी की बैठक भी बुलाई थी जिसमें इस पर विस्तार रूप से उन्होंने चर्चा की। और ये एक अजूबा बात है कि कैसे प्रधानमंत्री, जो मेरे हिसाब से हमारे राष्ट्र के सबसे लंबे तौर के एक नेता हैं, उन्होंने उसी दिन वक्तव्य दिया जिसके पहले दिन वो सबसे लंबे नेता घोषित किए गए थे। और इस वक्तव्य में कई ऐसी चीज़ें आई हैं जिसका उल्लेख उन्होंने किया जिससे पूरा देश मेरे हिसाब से यह जान गया है कि बड़ी समस्या है और इसको जूझने के लिए सबका प्रयास की आवश्यकता है, जनभागीदारी की आवश्यकता है। अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कोविड बिन बुलाया मेहमान था, वैसे भी यह जो चुनौती आई हमारी दी ही नहीं है, लेकिन इसका सामना करने के लिए सबको साथ होना पड़ेगा। जी बिल्कुल, एकजुटता का संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। लेकिन हालात दुनिया के ऐसे हैं, विश्व के ऐसे हैं, जाहिर सी बात है कि ऐसे दौर में हर देश को अपनी एक नीति भी तय करनी है। अशोक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि जो दुनिया की इस समय स्थिति है, जो टकराव की स्थिति है, जो युद्ध की स्थिति है, जाहिर सी बात है दुनिया के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ऐसे में डिप्लोमेसी की अगर मैं बात करूं, भारत के रुख की बात करूं, प्रधानमंत्री जी ने जो आज सदन में कहा उसे आप कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? जी बहुत धन्यवाद मनोज जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी का जो वक्तव्य था, मेरे विचार से वो एक संदेश था अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, जो कैसे हमको एकजुटता से काम करना है। परंतु ये संदेश था पूरे विश्व के लिए भी, और विश्व को इसको आगे देखकर कैसे चलना चाहिए। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने यही संदेश दिया था जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था फरवरी 2022 में। तब सितंबर 2022 में उनकी मुलाकात हुई थी। आपके सभी सुनने वालों, देखने वालों को याद होगा, समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट था और पूरे विश्व के जो मीडिया था उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को कहा था, अभी 5-6 महीने हुए थे उस युद्ध के, उन्होंने कहा था ये युद्ध का दौर नहीं है, हमको डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत और कूटनीति से हमें इसका समाधान निकालना चाहिए। वही प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी यही संदेश दिया है, जो ये जो युद्ध है, किसी भी मसले का हल युद्ध बैटलफील्ड पर नहीं होता है, वो बातचीत से ही होता है। तो इसीलिए यही वो संदेश देते रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से एक और उन्होंने जो कहा, जो कैसे वहां पर हमारे भारतीय लोग हैं 1 करोड़ से ज्यादा हैं, उनकी हमको कैसे रक्षा करनी है, सुरक्षा देनी है, कैसे सहायता करनी है, कैसे करीब 3 लाख लोगों को हम वहां से अपने देश वापस लेकर आए हैं, और दूसरे हमें अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी के लिए क्या हमने काम करना है जो हम कर रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ उन्होंने ये भी
संदेश दिया, जो हमको सबको मिलकर साथ कर काम करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चुनौती है जो कोविड के समय भी आपको याद होगा, पूरा विश्व ये बता रहा था जो भारत की जो हेल्थ सिस्टम है कितना फ्रेजाइल है जी, कितना वीक है, वो चरमरा उठेगा। परंतु भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया जो न केवल हम अपना ख्याल रख सकते हैं, परंतु हमने 100 देशों से ऊपर को 3 मिलियन डोजेस दिए थे। तो वो हमने सब साथ मिलकर, पूरे देश ने साथ मिलकर इसका सामना किया था जी। और इस समय भी हमको पूरे देश को मिलकर सामना करना पड़ेगा, कर रहे हैं, और इसका नतीजा हमारे लिए अच्छा ही निकलेगा। जी, जाहिर सी बात है, कोरोना काल के समय जिस प्रकार से आपूर्ति चैन वैश्विक स्तर पर ठप हो गई थी, उसी प्रकार की ऊर्जा संबंधी कई चुनौतियां आज दुनिया के सामने खड़ी हैं। शशांक जी, भारत के सामने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। ये कौन कौन सी चुनौतियां हैं? इन चुनौतियों पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो मानवतावादी चुनौती है कि हमारे इतने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको वापस लाना, इसका उल्लेख उन्होंने किया। दूसरा ऊर्जा की चुनौती है। ऊर्जा बहुत भयंकर रूप से, मैं समझ रहा हूँ कि किल्लतें देश भर में, पूरे विश्व भर में हैं, उसको हम लोग उसका कैसे समाधान करेंगे। ये प्रासंगिक है कि अभी भी हमारे जो तेल के और ये जो प्राइसेस हैं उसमें बढ़त नहीं आई है। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सभी मंत्रियों को साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि जो सबसे बड़ी समस्या है जो ऊर्जा की, उसको टैकल करने के लिए बहुत पहले से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश तैयार था। आप जानते हैं कि कई सालों से हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी बहुत फोकस किया है। सोलर का अनुपात और रिन्यूएबल का अनुपात बहुत बढ़ गया है। इसी के साथ साथ शांति बिल भी आ रहा था कि आने वाले समय में भी उसका अनुपात बनेगा। उसी के साथ साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग भी 20% हो गई है। उसी के साथ कई ऐसी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जैसे किसानों के लिए कुसुम की प्रावधान था जिसमें कि सोलर के पंप्स आ सकते हैं। तो तरह तरह से जनभागीदारी से अगर हम काम करेंगे तो ये जो किल्लत आएगी और स्वाभाविक रूप से होगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह फ्रीज हो गया है, उसमें बहुत कम शिप्स आ रहे हैं, कुछ हद तक हमारे जहाज आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग को अपनी कमर कसनी पड़ेगी इसके लिए, जैसे कि हमने कोविड में भी किया है। और उसी के साथ साथ मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी के मामले में उन्होंने जो बात रखी कि हम लोग को भी देखना पड़ेगा कैसे भारत अपना प्रतिनिधित्व और अपना दबाव ईरान पे भी, इजराइल पे भी, यूनाइटेड स्टेट्स पे बनाए, ताकि एक उभरते हुए शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हम लोग भी इस ये समझते हैं बहुत बड़ी जो आपदा आई है उसमें अपना भी योगदान दे। तीनों तरफ से, मानवता से की तरफ से, आर्थिक रूप से भी, और मैं समझता हूं कि वैश्विक रूप से भी हम लोग एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्यक्ष नेतृत्व दिखने को मिला, सदन में उनका उठना, उनका यह कहना बहुत महत्वपूर्ण था पूरे देश के लिए और जैसा कि बताया गया विश्व के लिए भी। जी, जाहिर सी बात है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में अपने वक्तव्य में बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं के समाधान पर वैश्विक स्तर पर जोर दिया है, संदेश दिया है। दो बातें और बहुत महत्वपूर्ण अशोक जी प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कही हैं। एक, भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है, और दूसरा, कमर्शियल जहाजों पर हमला और अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर ये दो बातें और कही हैं। आप इन दोनों मुद्दों को कैसे देखते हैं? जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रधानमंत्री ने कही इसमें अपने वक्तव्य में। और ये देखिए, केवल फायदा इससे भारत का ही नहीं है, इससे पूरे विश्व का फायदा है। क्योंकि अगर आप देखें, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो बंद कर दिया गया है, तो करीब वहां से विश्व का 20% तेल वहां से आता है, पूरे विश्व को प्रदान करते हैं। भारत का अपना जो है, हम करीब 85% तेल अपना बाहर से आयात करते हैं, उसमें करीब 40% हमारा जो तेल है इसी क्षेत्र से आता है। हमारा अगर गैस का देखा जाए, एलपीजी का, जिसके बारे में आजकल बहुत बातचीत होती भी रही है, उसमें भी अगर देखा जाए तो हम करीब 60% आयात करते हैं, और उस 60% का करीब 90% इस क्षेत्र से आता है। तो भारत के लिए मुश्किल है, परंतु और जो बहुत सारे देश हैं, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया हो, सभी देशों की आपूर्ति यहां से तेल जब निकलता है वहां होती है। तो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं जो कैसे तेल के दाम इतने ऊपर हो गए हैं। जैसे कहा जाए, इंडिया बास्केट वो करीब $156 प्रति बैरल हो गई है, जबकि 27 फरवरी को जब ये युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले करीब $70-72 पर बैरल थी। तो 120% इसमें इजाफा आया है। और
भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दूसरा है वहां से जो कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि जो भी व्यापार होता है पूरे विश्व का, इन देशों के लिए जो खाड़ी के देश हैं और जो बाहर के देश हैं जो वहां पर सामान आपूर्ति करते हैं। देखिए, अगर आप भारत की बात करें मनोज जी, तो वहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जो कि हमारे लिए सबसे दूसरे नंबर पर है, जहां पर हमारे निर्यात जाता है, एक्सपोर्ट जाता है। सबसे ज्यादा अमेरिका में, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारा तीसरा सबसे बड़ा ऐसा देश है जिसके साथ हमारा व्यापार होता है जी। पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, चौथा सऊदी अरेबिया। तो कहने का मतलब ये है जो हमारा करीब $200 बिलियन का ट्रेड इससे होता है, पूरे विश्व का भी ट्रेड इससे बहुत होगा, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत सटीक तरीके से कहा, जो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और कोई भी जो ट्रेड है, यातायात है, व्यापार है, उसके ऊपर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए। आखिरी बात अगर आप मुझे कहें, अनुमति दे, तो मैं ये कहूंगा, देखिए कुछ लोग यहां पर कहते हैं भारत में, कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं जो भारत एकदम चुप बैठा है, भारत कुछ नहीं कर रहा है। मैं कहूंगा ये सत्य से बिल्कुल परे है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद जैसे कहा, दो बारी उन्होंने जो विश्व के नेता है वहां पर, चाहे ईरान के राष्ट्रपति हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति हो, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हो, एमीर हो कतार के वगैरह, सबसे बार बार बात की है जो इस युद्ध को जल्दी से निपटाना चाहिए। यहां तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति, मलेशिया के प्रधानमंत्री, सभी से उन्होंने बात की है। तो ये कहना जो भारत निष्क्रिय बैठा है, ये बिल्कुल ही सत्य नहीं है, सत्य से कोसों दूर है जी। शशांक जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा अशोक जी ने यहाँ उठाया है और इसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी किया है कि किस तरह से पश्चिम एशिया में जो संघर्ष की स्थिति है उस सब वो शांतिपूर्ण ढंग से उसका समाधान हो। प्रधानमंत्री जी ने जो दुनिया के प्रमुख देश हैं उनके साथ लगातार संवाद बनाए रखा, बातचीत करके कैसे रास्ता निकाला जाए, उसमें महत्वपूर्ण योगदान भारत के प्रधानमंत्री और भारत अपना दे रहा है। लेकिन कुछ लोग सवाल उठाते हैं, चुप्पी पर सवाल उठाते हैं, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? देखिए, डिप्लोमेसी में मेरे हिसाब से बहुत बोलना आवश्यक नहीं होता है, काम करना आवश्यक होता है। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सदन को अवगत कराया, उन्होंने लगभग हर मिडिल ईस्ट के नेता के पास उन्होंने फ़ोन किया, एक बार नहीं 2 बार फ़ोन किया, और अन्य लोगों से भी उनकी वार्तालाप परस्पर चल रही है। मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत बोलने से, अनावश्यक ज्ञान देने से खराब होगा भारत के लिए। बल्कि मैं समझता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आपदा को एक तरह से एक अवसर में बदलने की चुनौती भी स्वीकार करी है। वो 2-3 प्रकार के अवसर हैं। एक अवसर ये है कि अब विश्व में भारत का जो डंका है, अब चीन के वास्तविकता सब लोग समझ गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में भी कुछ हद तक दरारें हैं, कुछ और जो बड़े देश हैं उनके बनस्पत भारत अब अपने आप को मुखर कर रहा है, और उसमें मैं समझता हूँ इस क्वाइट डिप्लोमेसी से बहुत फ़ायदा हमें होगा। दूसरा, मैं समझता हूँ कि भारत जो विश्व गुरु की बात हम लोग बार बार कहते हैं, उसमें शांति और शक्ति दोनों का प्रारूप उसने दिखाया है। शांति का प्रारूप क्योंकि हम लोग बुद्ध भगवान की, महात्मा गांधी की हम लोग धरती हैं, लेकिन यहाँ भी राणा प्रताप, मंगल पांडे पैदा हुए, और उसी ने हमने सिंदूर में ये दिखा दिया कि किस प्रकार से अगर जरूरत पड़ेगी हम प्रहार भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसलिए भी उनका जो एक विश्व गुरु का संदेश है वो भी जा रहा है कि हम लोग शक्तिशाली तो हैं, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत धीरे से करते हैं। और तीसरी चुनौती मैं समझता हूँ इसमें जो आई है, जो कि ऊर्जा से है, मैं समझता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आज के वक्तव्य ने उन्होंने इशारा किया कि इस चुनौती को हम पूरा देश स्वीकार करें और इसको अवसर में बदले, ताकि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी में जो आत्मनिर्भरता की बात हम लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पर हम लोग मिलजुल के अपने आप को एनर्जी सिक्योर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि जैसे कि कोविड के मामले में, जैसे कि पहले अन्य विषयों पे भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी भी चुनौती को स्वीकार करके उसको अवसर में बदला है, यहाँ भी इन 3 विषयों पे उन्होंने अवसर में बदल दिया है, और उसके लिए मैं उनको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आदर करता हूँ। जाहिर तौर पर अगर एनर्जी की बात की जाए, ऊर्जा की बात की जाए, तो सरकार के पिछले 1 दशक में जो फैसले हैं उसके चलते आज भारत में
ऊर्जा का जो उत्पादन है, जो शक्ति है, वो बड़ी है। इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, पेट्रोल के साथ 20% का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही सौर ऊर्जा में भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस बनाया है ताकि सौर ऊर्जा के जरिए भारत आत्मनिर्भर हो सके। रेलवे का विद्युतीकरण किया गया है ताकि पेट्रोल पर और दूसरे जो ईंधन हैं उस पर भारत की निर्भरता विदेशों पर कम से कम हो सके। इस तरह के फैसले सरकार ने लिए हैं। लेकिन एक बड़ा मुद्दा अशोक जी जो उभर के सामने आता है, अर्थव्यवस्था का आता है। जाहिर तौर पर जब दुनिया में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो दुनिया के हर देश के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी होती हैं। इस चुनौतियों को आप कैसे देखते हैं? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये वाले जहां पर ये युद्ध हो रहा है, जो क्षेत्र युद्ध हो रहा है, वहां पर जैसे मैंने पहले बताने का प्रयास किया, एक तो हमारे लिए, भारत के लिए, परंतु पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी वहां से आती है, वहां से निवेश भी होता है। तो ये अगर वहां पर ये युद्ध चल रहा है, जैसे हमने देखा है कितनी सारी वहां पर रिफाइनरीज हैं। शुरुआत के दिनों में ही जो सऊदी अरेबिया की रास तनूरा रिफाइनरी, उसके ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। 5,50,000 बैरल पर डे उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी है, वो वहां से निकलती है। अब सऊदी अरेबिया अपने रेड सी से, यानबू से, वहां से वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, वहां पर भी उसके ऊपर हमला किया गया। तो देखिए, ऐसे अगर उन सबकी देशों की सक्षमता को खत्म किया जाए तो फिर जो वहां से ऊर्जा निकलती है वो बाहर और देशों में आ नहीं पाएगी और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा, ये अर्थव्यवस्था और ऊर्जा, एनर्जी सिक्योरिटी बिल्कुल एकदम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। भारत ने, आपने बिल्कुल ठीक बताया, और आपके जो दूसरे पैनलिस्ट हैं शशांक मनी जी, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया जो कैसे हम रिन्यूएबल्स की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताया, उसका हवाला दिया, परंतु उसके अलावा चाहे वो विंड एनर्जी हो या इथेनॉल का प्रयोग हो या टाइडल एनर्जी हो, वो हम बहुत तेजी से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और भारत एकमात्र देश है जिसने अपनी पेरिस अकॉर्ड कमिटमेंट्स को, जो हमें 2030 तक करनी थी, उनको हमने अभी से पूरा कर लिया है। और हमने अपनी जो क्षमता है उसको हम और बढ़ा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। हम करीब 550 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम रिन्यूएबल से बना रहे हैं। तो मतलब चाहे हम अपने को डाइवर्सिफाई करें, जैसे मैंने बताया, जो पहले हम 20-22 देशों से ऊर्जा का आयात करते थे, अब हम करीब 41 देशों से करते हैं। तो मतलब अगर हॉर्मुज में वहां से ऊर्जा आने में हमें दिक्कत होती है तो हम चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे वेस्ट अफ्रीका, चाहे अमेरिका, वहां से हम एलपीजी ले लेंगे, वहां से हम और अपनी ऊर्जा के लिए लेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ईरान से कहकर हमने वहां से भी काफी अपने टैंकर्स मंगाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो संकट तो है, परंतु सरकार इसकी तरफ भरपूर तरीके से सजग है और पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कि कम से कम हमारे देशवासियों को इसमें दिक्कत आए, मुश्किलें आए। जाहिर तौर पे संकट है, लेकिन समाधान के लिए भी रास्ते निकाले जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं। और इन्हीं कदमों का परिणाम है कि भारत ने लगातार दूसरे साल 100 टन कोयला उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सरकार ने शांति कानून के जरिए परमाणु ऊर्जा पैदा करने पर भी जोर दिया है। महत्वपूर्ण, सरकार लगातार इसको लेकर प्रयास करती रही है और यह प्रयास अभी से नहीं, पहले से, जैसे कहा, एक दशक से जो प्रयास किए जा रहे थे देश ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, शायद इसके पीछे यही संदेश था। लेकिन एक आखिरी सवाल शशांक जी, किसानों की चिंता को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार यह भरोसा देती है कि किसानों की जो हर संभव मदद की जाएगी, देश में जो अन्न के भंडार हैं वो भरे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि हमारी पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मनसा ये है कि अंत्योदय की भावना से जो आखिरी व्यक्ति है उसको कोई हानि न हो। और उसी के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मैं समझता हूं चुनौती तो है, लेकिन मेरे हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जिसका इमर्जिंग मिडिल क्लास इतना बड़ा है कि उसके होते होते हम लोग बहुत एक्सपोर्ट में उतने निर्भर नहीं हैं तो थोड़े बहुत, लेकिन उतने निर्भर नहीं। तो ये भी एक आवश्यकता है कि इस क्राइसिस को हम लोग अपॉर्चुनिटी बदलने की जो हमारी मनसा है
उसमें हम लोग अपने ही इमर्जिंग मिडिल क्लास को, जिसमें फार्मर और किसान बहुत बड़ा एक वर्ग है, उसका संबल बढ़ाएं, उसको और चीज़ें दें, उसको उसकी थोड़ी रक्षा करें। जैसे यूरिया की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, उन्होंने कुसुम स्कीम की बात उन्होंने करी। ऐसे कई प्राविधान हैं जिसके माध्यम से जो साधारण व्यक्ति है उसको हम लोग सुरक्षित रखें इस आपदा में, और उसी के साथ साथ उनको प्रोत्साहित करें कि मध्य भारत से जो हमारे छोटे गांव शहर हैं, जैसे देवरिया मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां पर हम लोग इसी क्राइसिस को लेके अब अपनी एक अलग उज्ज्वला ज्वारा से आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग अपने लोगों को प्रोत्साहित करें कि लघु उद्योग वहां लगाएं। देखिए, चीन कुछ हद तक बहुत निर्भर है बाहरी एक्सपोर्ट पे, अन्य देश भी बहुत निर्भर हैं, भारत भी निर्भर है, लेकिन उतना निर्भर नहीं है। हम लोग अभी भी स्वावलंबन की तौर पे जिसका उल्लेख कुछ ही दिनों पहले स्वदेशी का उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, और ये जो एनर्जी क्राइसिस है, कुछ हद तक एक्सपोर्ट की जो क्राइसिस है और इंपोर्ट की क्राइसिस है, इससे भी हम लोग स्वावलंबन की ओर अलग कदम उठा सकते हैं ताकि विकसित भारत का स्वप्न अपने आत्मनिर्भरता से भरे। मैं समझता हूं कि इस आपदा में ये एक सिल्वर लाइनिंग भी है, इसको हम लोग को अवश्य आगे बढ़ाना चाहिए। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा किसानों के लिए, वो मैं खास करके उसका उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि लगभग 65% लोग अभी भी किसानी पे मेरे लोकसभा में डिपेंड हैं और करीब 45% पूरे देश भर में हैं। उनकी सुरक्षा प्राथमिकता रहती है। जी बिल्कुल शशांक जी, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को संसद से दुनिया को मानवता और शांति का संदेश दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी युद्ध पर विराम लगेगा और दुनिया में सहज गति से आवागमन चालू होगा। अशोक जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। Namaskar and welcome to Sunset TV. You are watching History Behind Headlines. I'm your host Rajiv Kumar Singh. The United States and Israel carried out coordinated strikes on Iran on the 28th of February, the latest escalation in a confrontation that stretches back more than 7 decades. Once again, the world is watching West Asia with deep concern. The crisis has entered a new and uncertain phase with the declared death of Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. His passing could reshape political calculations inside Iran and across the region. Tensions between Washington and Tehran continue to keep the international community on edge. This is not a single crisis, one war or one nuclear dispute. It is a layered confrontation, historical, ideological, strategic, and deeply emotional. No analysis of US-Iran tensions is complete without considering Israel's security calculus. Israel views Iran's missile development and potential nuclear capability as existential threats. American military and diplomatic support for Israel intersects directly with Iran policy. On Saturday, 28th of February, US and Israel launched an attack on Iran. The Iranian news agencies reported that explosions were heard in the cities of Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, as well as in the capital Tehran.
After the attack, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thanked the American president for his leadership. Iran followed with a swift counter-attack on Israel and US bases in the region. Earlier, the US President Donald Trump confirmed a major combat operation in the region. The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. The crisis in West Asia took a dramatic turn the next day. On Sunday, the 1st of March, Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, was declared to have been assassinated in the joint United States-Israeli action. Tehran vowed retaliation, and it came swiftly. Iran launched widespread strikes across the region. Targets included Israel, United States military bases, and key energy infrastructure in several Gulf countries. Facilities in Saudi Arabia and United Arab Emirates have been hit. Even the global commercial hub of Dubai has come under attack. At sea, tensions are also rising. Iran has moved to disrupt shipping through the strategic Strait of Hormuz, one of the world's most critical oil transit routes. Any prolonged disruption here could send shockwaves through global energy markets. Countries heavily dependent on Gulf crude, including India, will be watching developments very closely. The situation remains extremely volatile, with fears growing that the confrontation could widen across the region. The regional landscape is increasingly layered and fluid. For Israel, Iran's nuclear development is considered an existentialist threat, which directly translates into intense lobbying for a hardline US approach. This, however, creates a complex dynamics where Washington must balance its own strategic interests with the immediate survival needs of its key ally, Israel. Earlier, in June 2025, Israel launched major airstrikes on Iranian nuclear and missile facilities, citing concerns over Tehran nearing weapons-grade capability. The United States joined with limited strikes on key enrichment sites, including Fordo, Natanz, and Esfahan, describing the action as a preventive measure. Iran condemned the attacks, retaliated, and a brief but intense confrontation followed before a negotiated ceasefire. The latest US-Iran nuclear talks had concluded without a final agreement. Despite official statements describing the discussions as among the most serious in recent years, fundamental gaps remain, most notably over Iran's right to enrich uranium on its soil, the future of its existing stockpiles, and demands for extensive guarantees against weapons development. The February 28th and the following attacks overturned whatever little progress was deemed to have been achieved. Why does US-Iran tension matter globally? Nearly 20% of global oil trade passes through the Strait of Hormuz. Iran holds the world's second largest natural gas reserves and major oil reserves. US has extensive military presence across Gulf bases. Any tension here causes immediate impact on inflation, shipping insurance, and energy prices. It also has implications for the global nuclear non-proliferation regime. Oil prices react within minutes to escalation. Shipping routes are recalculated. Insurance premiums spike. Nuclear diplomacy trembles.
regional flashpoints intensified. To understand the present, we must first return to the past. In 1953, Iran's democratically elected Prime Minister Mohammad Mossadegh was overthrown in a coup backed by American and British intelligence agencies. The operation, known as Operation Ajax, followed Mossadegh's decision to nationalize Iran's oil industry, previously controlled by the Anglo-Iranian Oil Company. For Washington, this was an act of Cold War containment. There were fears that instability in Iran might create space for Soviet influence. For many Iranians, however, it became the original wound, evidence that foreign powers would intervene to safeguard strategic and economic interests. The Shah, Mohammad Reza Pahlavi, was restored and ruled with growing authoritarianism. His regime received sustained American political, military and intelligence support. Iran became a key pillar to US strategy in the Persian Gulf. But inside Iran, resentment simmered over political repression, widening inequality and visible Western influence. That resentment would eventually erupt. In 1979, the Islamic Revolution swept away the monarchy. The exiled cleric Ayatollah Ruhollah Khomeini returned to Iran and established an Islamic republic grounded in the doctrine of Velayat-e-Faqih, rule by the supreme jurist. The revolution fundamentally transformed Iran's internal structure and global posture. The United States, once a close ally, became the Great Satan in official rhetoric. Later that year, Iranian students seized the US embassy in Tehran. 52 American diplomats were held hostage for 444 days, from November 1979 to January 1981. The hostage crisis dominated American television screens and contributed significantly to President Jimmy Carter's electoral defeat in 1980. Diplomatic ties were severed. Sanctions began. Mistrust hardened into institutional policy. From that moment onward, reconciliation became not merely difficult, but politically risky on both sides. The revolution replaced a pro-Western monarchy in Iran with an Islamic republic governed by the supreme leader. A core ideological pillar became the rejection of Westernization and secularism. The United States was now labeled the Great Satan and was seen as the puppet master of the former Shah. Soon after the revolution, Iraq invaded Iran in 1980 under Saddam Hussein. The Iran-Iraq War lasted 8 devastating years. Casualties are estimated in the hundreds of thousands, with some assessments placing the toll far higher. Chemical weapons were used, particularly against Iranian troops and Kurdish civilians in Halabja. The international response was limited. During the war, Iran felt strategically isolated. Several Western and regional powers provided varying degrees of support to Iraq. The trauma of this war reshaped Iran's strategic doctrine, with emphasis on asymmetric warfare, development of ballistic missile capability, building alliances with non-state armed groups, deep skepticism toward international security guarantees. Iran concluded that self-reliance, military, technological and strategic, was essential for survival. That lesson continues to shape Tehran's policies. Is the US-Iran confrontation ideological or strategic? Is it about
revolutionary Islam versus Western liberal democracy? Or is it about influence, deterrence, and regional balance? From one perspective, the clash appears ideological. From another, it reflects classic geopolitics, a regional power resisting foreign military presence near its borders. Iran sees American naval fleets in the Gulf, US military bases in Bahrain, Qatar, the UAE, and Kuwait, close US security ties with Israel and Gulf monarchies. Washington sees Iran's support for Hezbollah in Lebanon, influence over militias in Iraq, support for the Syrian government, alleged backing of Houthi forces in Yemen. Ideology amplifies rhetoric. Strategy shapes policy decisions. It is the isolation. The ideological part is that post the revolution, Iran, believed in exporting the revolution. And I think that became the ideological part of it, which was unacceptable to the United States of America to protect its allies. Before his death, at the center of Iran's political system stood Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, who was in office since 1989. Under his leadership, Iran combined negotiation with deterrence, diplomacy alongside missile development, engagement alongside regional leverage. In due course, the US-Iran rivalry became structural, embedded in institutions and national narratives. No issue has intensified tensions more than Iran's nuclear program. Iran is a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty and insists its nuclear activities are for peaceful purposes. Western governments remain skeptical. Concerns focus on uranium enrichment levels, advanced centrifuge development, past concealment of facilities such as Natanz and Fordo. The dispute culminated in 2015 with the signing of the Joint Comprehensive Plan of Action under US President Barack Obama. Under the agreement, Iran agreed to reduce installed centrifuges by roughly 2/3, cap enrichment at 3.67%, reduce uranium stockpiles significantly, allow intrusive inspections by the International Atomic Energy Agency. In exchange, sanctions were lifted in phases. For a brief period, diplomacy appeared to triumph. European nations welcomed the deal. Iran's oil exports rebounded and global markets stabilized. However, in 2018, under President Donald Trump, the United States withdrew from the agreement and launched a maximum pressure campaign, reimposing sweeping sanctions. Washington argued that the deal did not address ballistic missile development, regional proxy activity, sunset clauses in the agreement. Iran gradually reduced compliance. Enrichment levels increased well beyond 3.67%, with reports indicating enrichment beyond 60% purity, far closer to weapons-grade levels than before. The consequences were global. Oil markets fluctuated. Diplomatic trust eroded. The durability of long-term agreements came into question. The nuclear issue is no longer solely about atomic capability. It has become a test of whether international agreements can survive leadership transitions. The fundamental trust necessary for a robust, lasting deal has been replaced by a mistrust that requires intense mediation. Sanctions have been a central tool of American policy toward Iran. They have targeted banking and financial institutions, oil exports, shipping and insurance sectors, access to the SWIFT financial systems. At peak pressure,
Iran's oil exports fell sharply from over 2 million barrels per day to well below 1 million. Government revenues declined significantly. Inflation surged above 40% in certain years. The Iranian rial experienced steep depreciation, eroding household savings and purchasing power. Supporters argue sanctions exert pressure without resorting to war. Critics argue they disproportionately affect ordinary citizens, raising food prices, restricting access to medicines, and limiting employment opportunities. If the sanctions are imposed on a nation or the arms embargo is imposed on the nation, they try to be more dependent on their own ways. They do create certain weaknesses and hurdles and problems for the state. But of course, it creates a situation for them. It's a question of survival for a nation. And Iran is not like other countries, you know. It's a nation which has, a civilizational roots. And also the Shia, the factor which is very much part and parcel, which is driving, the policies of Iran today. Meanwhile, countries such as China and Russia have maintained varying degrees of engagement with Iran, reflecting shifting global alignments and emergence of multipolarity. Beyond the nuclear issue lies a deeper contest: influence in the Middle East. Iran exerts influence in Iraq through political alliances and militia networks, particularly after the 2003 US invasion reshaped Iraq's political order. In Lebanon, it supports Hezbollah, widely regarded as one of the most powerful non-state armed groups in the region. In Syria, Iran backed President Bashar al-Assad during years of civil war, deploying advisors and mobilizing allied militias. In Yemen, Tehran is accused by Washington and Gulf states of supporting Houthi forces in a conflict that has generated severe humanitarian consequences. To Tehran, these alliances create strategic depth, pushing potential conflict zones away from its borders. To its rivals, they represent destabilizing expansion. Israel perceives Iran's missile capabilities and regional posture as major security threats. When violence flares in Gaza, southern Lebanon, Syria, or the Red Sea, US-Iran tensions often intensify indirectly. The rivalry rarely unfolds in isolation. It intersects with nearly every major Middle Eastern flashpoint. Approximately 1/5 of global oil consumption, between 17 to 20 million barrels per day, passes through the Strait of Hormuz, a narrow maritime corridor between Iran and Oman. At its narrowest point, the strait is roughly 33 kilometers wide. It remains one of the most strategically sensitive waterways in the world. Even temporary disruption can cause immediate spikes in global oil prices. Energy importing nations brace for volatility. For Asia, including India, China, Japan, and South Korea, heavily dependent on Gulf crude, instability carries immediate consequences. For Europe, navigating energy transitions and broader geopolitical disruptions, volatility in Gulf supply adds further uncertainty. Thus, US-Iran tensions are not regional alone. They have global economic implications. In January 2020, the United States conducted a drone strike near Baghdad airport that killed Iranian General Qasem Soleimani, commander of the Quds Force. The strike marked one of the most dramatic escalations in decades. Iran responded with missile attacks on US bases in Iraq. While full-scale war did not follow, tensions rose sharply, and the world watched closely.
Modern warfare, including drones, cyber capabilities, precision missiles, and AI-enabled surveillance reduces warning times and increases unpredictability. The margin for miscalculation remains narrow. The confrontation between the United States and Iran is often described in dramatic terms: brinkmanship, red lines, shadow wars. But beneath the headlines lies a more complex reality. This is not merely a dispute between two governments. It is a contest shaped by regional rivalries, global power shifts, economic pressures, domestic politics, and the lived experience of millions. In Iraq, American forces and Iranian-aligned militias operate in uneasy proximity. In Syria, US troops and Iranian-backed elements have found themselves on opposing sides of a fragmented battlefield. In Lebanon, Hezbollah's arsenal remains central to Israeli security calculations. In Yemen, prolonged conflict has caused widespread humanitarian suffering, displacement, and food insecurity. For Iran, these alliances provide deterrence and strategic depth. For the United States and its partners, they represent destabilization. The pattern is one of calibrated escalation. Yet proxy conflict carries danger. Cyber attacks, drone strikes on infrastructure, maritime seizures. The battlefield has expanded beyond traditional front lines. Proxy warfare in the Gulf region is a highly sustainable, long-term strategy for both Iran and the United States, primarily because it offers a low-cost, high-impact method to project power, maintain deterrence, and avoid direct, ruinous military conflict. Foreign policy does not exist in isolation from domestic politics. In Iran, the political system blends elected institutions with clerical oversight. Economic pressures, including sanctions-driven inflation, periodically generate debate. A significant portion of the population is young and digitally connected. Some advocate engagement with the international community. Others argue resistance protects sovereignty and dignity. Historical memory of foreign intervention remains a powerful factor in shaping national sentiment. I don't think the country like Iran, with theocratic democracy that they call it, they will never ever budge. But they want to negotiate from the position of strength, even though they're not sitting on the position of strength. In the United States, Iran policy has altered between engagement and pressure. Under Barack Obama, diplomacy produced the nuclear agreement. Under Donald Trump, maximum pressure has redefined the approach. Electoral cycles influence tone and tactics. This fluctuation creates uncertainty for allies and negotiating partners. It raises a difficult question: can durable diplomatic frameworks survive domestic political transitions? The global system itself is evolving. China has expanded economic ties across the Middle East, including long-term energy agreements. Russia has coordinated strategically with Iran and Syria. European nations continue to advocate diplomatic engagement. Emerging powers across Asia, Africa, and Latin America increasingly question unilateral sanctions frameworks and advocate a more multipolar order. The US-Iran rivalry now sits within broader global competition. In the aftermath of the latest escalation between Iran, Israel, and the United States, global attention is now shifting beyond the immediate battlefield.
The world is watching closely to see how major powers like Russia and China position themselves in response to the unfolding crisis. European nations, too, will be under scrutiny, whether they push for restraint and diplomacy or recalibrate their strategic alignments in a rapidly polarizing geopolitical landscape. The long and troubled history between the US and Iran has entered another dangerous chapter, with Israel now directly engaged alongside the United States and Iran facing an uncertain leadership transition after the death of Ali Khamenei. The stakes are higher than ever. For decades, despite deep hostility, a full-scale war was avoided. That restraint now appears increasingly fragile. Energy security, regional stability, and the global economic balance are all at risk. The real test in the coming days will be whether diplomacy and statesmanship can still prevail over escalation. That is all we have in this program. Thank you for watching Sunset TV. Namaskar viewers, hello and welcome to this special telecast on Sunset TV. I'm Tina Jha. The World Sustainable Development Summit held in New Delhi brought together voices from across the globe, with everyone talking about one common theme, which is how to move forward in a rapidly changing world. But since then, the world hasn't stood still. We've seen fresh climate concerns, continued geopolitical tensions, and growing debates around energy, equity, and responsibility. Which is why those conversations feel even more relevant today. Because what was discussed at WSDS 2026 wasn't just about distant climate goals. It was about the real challenges countries are dealing with right now and the tough choices that lie ahead. On the sidelines of the summit, I spoke with experts from across key sectors: energy, policy, industry, also climate diplomacy, to understand how they see this moment and what comes next. So in this special report, I'm going to bring you insights from some of the leading global voices who are shaping the sustainability discourse.
the world navigates uncertainty, from conflicts in different parts of the world to energy insecurity, the question that remains, can sustainability stay on track? This was a question I asked sustainability experts on the sidelines of the WSDS 2026, trying to understand from them how geopolitics is influencing climate action and international cooperation. I think this is very crucial in this moment of time, that we do not look away, that we are able to find common ground in this era of tension. This conference here, we are seeing really a focus on sustainable development, and it is your 25th edition, so there's a long pathway towards this. There's also a long learning curve of what has worked in the past, what hasn't worked, how can we move forward. And if we look at the COP negotiations, where we try to find sort of a consensus among so many nations, we are seeing that this is very, very difficult right now in this moment in time. So these other fora where people come together, maybe also industry, academia, from different walks of life, science, and think through concrete solutions, it may be crucial for the larger negotiations to be revived and to have a new drive going into the next round. You are here to attend a summit at a time when there is significant geopolitical but also climate uncertainty. How do you see the conversations contributing towards trying to bring back the focus on climate resilience? Very good question, Tina. And I think, well, all of these geopolitical factors are in many ways detracting from a focus on sustainability. I think it's in spaces like this, convened here in the Global South, where we have an opportunity to refocus the conversation on sustainable development. And I think that in a way it's a moment of opportunity for new leadership at a time when the world is moving to a much more multipolar kind of arrangement of power. And so it is a moment of change, a moment of reflection on what has worked in multilateralism and what has not worked. And it's a good time for discussions around how we can advance towards a more just global architecture, and a very good time for India to play a role in shaping that conversation. How would you assess India's leadership position in at least shaping the conversations around sustainable development and ensuring that the focus is brought back to conversations which impact the world? No, that is a point that India has been very effective in bringing that point forward in global conversations, and I think as I say that now there is even more opportunity for changing that conversation and bringing that kind of perspective forward. The message that Prime Minister Modi sent to this summit, I thought was very powerful, and it referred to the need to protect the planet as a duty, not a policy choice. And I think those are powerful words that he can bring to the world stage at a time when many heads of state are reaching out to India and wanting to hear India's perspectives on this moment that we're in globally, and how do we adjust to kind of new arrangements of power, and frankly to a bit of a leadership vacuum in the world today. So it's a good moment to be bringing that message forcefully on the world stage. How do you see institutions like yours, the IISD and India, now collaborating more strongly, at least in sending out those messages to countries where it matters the most, and to make sure that it's no longer about incremental transformations, it's about structural transformations we've already discussed, but what's more important is the scale and the time is now? It's the only way, I would say, the only way to arrive at kind of better structural arrangements is
through organizations like TERI and like mine, working together to develop these kinds of visions and these ideas. And I think, as I say, now is a moment of opportunity to bring those kinds of ideas forward. And so there's many areas in which we can work. I've mentioned energy as being an area that we're working in already extensively here in India. But as I've been here over the last 2 days, I can see that there's many other areas where we would like to develop collaborative relationships, adaptation to climate change being one of them, nature-based solutions being another very interesting area where we do work internationally and would like to do more here with partners in India. India is increasingly becoming central to the global climate negotiations. I'll ask you a question on India-Europe collaboration and also the Global South. How important is our collaboration, the India-Europe collaboration, in shaping a more stable, more certain climate future? Yes, so I think in the Indo-European partnership, there has been a steady growth in its pathway, so to say. And of course, with the trade deal, there's a new era now coming. And I hope that somehow this will also mean a more green strategic partnership. Because let's face it, we are seeing very great dependency of Europe in the sector of fossil fuels. On fossil fuel imports, gas and oil. We are seeing very great dependencies on China with regards to renewable technologies. And so I think India could also be a great partner in Europe helping to diversify its energy security and the supply chains thereof. And I think if the approach to find common ground can be taken in a mutually beneficial way, then this would, be of great value to both partners. At the heart of the transformation debate lies energy, its accessibility, affordability, and sustainability. So how realistic are current energy transition pathways? And are the nations truly aligned? Here's a conversation I had with the Director of Energy Transitions Commission, Ms. Aita Kettleborough, and Ambassador Arnie Walter, who's former Secretary General of the International Energy Forum and also former Chairman of the International Energy Agency. Listen into this conversation. In the backdrop of the volatility and the geopolitical fragmentation, what would you say is the biggest challenge today in accelerating the global energy transition? So I think it's actually the biggest challenge is actually the uneven economics across the transition. So the good news, and we always should remember the good news, the core electrification technologies are now very favorable. Solar panels are incredibly cheap. In fact, incredibly cheap versus what we'd have thought even 10, 15 years ago. And in many cases, they're actually now increasingly cheaper than fossil fuel alternatives. You see that on the rollout of electric 2- and 3-wheelers in India, where actually on a total cost of ownership, in terms of running them, they're actually cheaper for many people today. And so in some sectors, in power, in road transport, for instance, we see acceleration, but that's not true of the whole economy. And in some sectors in particular, kind of steel, cement, chemicals, shipping, the harder, heavy industry, we do know the solutions, and they include, areas where India is really investing, like clean hydrogen or, clean fuels, but they're still very expensive today. And in a world where, as you say, some of the commitments are wavering, things are fragmenting, overcoming that cost premium in the short term is really challenging. In fact, since you mentioned India, I'll bring in the question on equity. Equity today is central in the global discourse on sustainable development. India has taken leadership position in that aspect through various initiatives in the past few years. How do you reflect on that kind of effort on part of India to take the global south along, to take the emerging economies along when it comes to green transition and accelerating those transition efforts? I think India has, in many ways, showed incredible leadership on a real range of different elements of the transition. It's a huge leader in solar. It's a huge leader in the kind of solar scale out. But crucially, it's a real leader in
innovating some of the key things that countries across the world will need. So it's innovated around round-the-clock renewable auctions. So these are auctions where you get your renewables, but also your storage, so that you can use the clean power when you need it as consumers, not just when the sun is shining or the wind is blowing. And that is what India has done there in that innovation is being kind of seen across the world, and is how a lot of countries are now looking to develop their auction systems. So there's a huge number of areas where India has stepped up. There's also the leadership it's showing in the International Solar Alliance that we partner with at the ETC on a lot. That's a real trying to make solar a development strategy for countries across the world. And then the third area I would just pick up, which is really why I'm here, and it's work I'm doing with Terry, who are hosting this conference, is really around agri-PV. So this is the idea of putting solar panels on productive farmland. So rather than displacing agriculture, creating any challenges about food security, etc., it's about actually putting the two of them together, getting a massive benefit from being able to roll out where you build solar, massively increase the area. When it's done well, also increase farmer incomes and have a second revenue stream also from power. And then thirdly, for nature and biodiversity, if you can use that agricultural farmland to build your solar, you reduce the pressures on biodiversity, on nature. So again, this is an area where India is really looking. There's pilots running across the country trying to see which crops, what's the impact on yields, how do we think about land acquisition, and that's another area where if India can kind of keep on this potential it's identified, it's a real potential roadmap for countries across the rest of the global Sunbelt. Coming now to some of the work that the Energy Transitions Commission has done, and most importantly, laying the emphasis that net zero is technically and also economically achievable. The question is, do you think, are we moving at the required speed and scale? Because through the conversations that have taken place at WSDS, it's not just about action, it's about timely action and at the scale at which it's being done. So the short answer, is it achievable? Yes, absolutely. Are we moving fast enough? No, not at all. Why do I say that? The reality check is last year the world briefly breached the 1.5 degree temperature to limit. On today's policies, according to the IEA, the International Energy Agency, we're on track to actually deliver 2.5 degrees of warming by the end of the century. And while we're already seeing huge human impacts of the warming we've already seen today, so that is it's a massive wake-up call. On the other hand, we believe we've looked at the data and we've looked at the kind of numbers that net zero is technically and economically feasible. It requires roughly only 1.5% of global GDP a year, which is actually less than we're currently spending on the costs of climate impacts. And we are making headway in some areas, and I think electrification is the area we're making most headway. It's the engine of the energy transition. It's the beating heart. There we are seeing the technologies come through, the solutions. Are we moving fast enough? While we're speeding up, we kind of still need to speed up more. But I think it's important to actually focus on what we are seeing moving. And the more we can create these self-fulfilling loops where the economics work for people, the faster we'll move. We've seen in some countries in the world that over the last year, we've seen rooftop solar drive solar penetration from kind of negligible to almost 20% over 3 years. That's because the economics work for individuals. In India, as I've talked about the 2-3-wheelers, where we're really seeing the takeoff, it's because it's a better product and it's cheaper to run. Where we can make that work, we can go a lot faster. Given the experience that you bring and the global experience in different roles and responsibilities that you've served over the years, what do you make of the overarching theme this year of WSDS, which is transformations, voices, vision, and values towards sustainable development? So where do you think transformation is needed most urgently? We need a transformation, but in that we also need a transition. We cannot just make a decision and then change things from one day to another. And that's where the problem lies. And also, when we want to change something,
it has to be done in a way that secures other objectives. We're talking about security of demand. People need energy to, let's say, to survive. Some countries have more energy than others, and when we have, this imperative that we need more energy to fuel global economic growth. And the problem is also that transformation, it means not only just looking at energy and climate measures, but we have to look at what we are doing as human beings. And that is, let's say, our patterns of consumption, our livelihoods. And that is not sustainable. You have very big divides between the global north and the global south. There are no, let's say, one-size-fits-all solutions to the problems. You've also been a diplomat. Given the geopolitical volatilities and the uncertainties that prevail, what are some of the biggest challenges, and how hopeful are you of climate diplomacy actually sustaining? So the conversations around climate cooperation, how much relevance do they have in today's geopolitical scenario? Well, I don't think there should be any climate diplomacy. Climate has to be integrated in diplomacy. So it has to be part of everything: economic development, defense, social expenditure, food security, social security. The governments have to deliver on all of these securities. And they can't do everything at once. Resources are limited, funds are limited, so they have to prioritize. And countries do that differently. Some can afford to look at objectives 50 years from now and have ambitious targets. Other countries have to look at the day tomorrow. And in some countries, the politicians, they have to perform. Otherwise, they don't get re-elected. And that means that they're not following a 50-year time horizon. They have shortened that. And that also means that there are some decisions that are good in themselves, but at odds with other societal goals. So we have to have a basic look at what we are doing to the planet as human beings. And the energy we have to use it more efficiently. And then we have to use cleaner energy. But we cannot stop using fossil fuels, and especially in a country like India, because that sets economic development back. We have to find a way where clean energy fuels economic growth more than the use of fossil energy, and also in a way that doesn't disrupt society. You have to have everyone on board. There has to be a sense of, let's say, equitable developments wherever you are in the country. Since you mentioned India, how do you reflect on India's progress, especially in trying to balance development with sustainability in order to grow sustainably? And also you mentioned the targets. So India is one country that has set ambitious targets for itself, and we are doing whatever we can in terms of reaching those goals, whether it is 2047 goal to become a developed country or whether it's the 27 net zero target. We are making, and we are in fact accelerating our efforts to reach that vision. How do you reflect on India's efforts domestically to make itself net zero, but also in terms of taking a leadership position to ensure that whatever we have, whatever technologies we're able to develop in this area, we will share it with countries in the global south. So in a way, taking a leadership position to ensure climate justice also in the global south, try to bridge that gap? Yeah. I mean, with India's population, the 1.4 billion, the resources, the civilizational heritage you have, it would be negligence not to assume a leadership role. And I think India is doing that quite well in the G20, BRICS. Also, you have the AI summit, which is a new elephant in the room because AI, this was a topic here at this session, it has to serve humanity. And
AI will require a lot of energy. Then the question is, what forms of energy? Does that mean more fossil fuels? Does that mean more renewables? Probably both. But then the problem is that with limited amounts of energy, what the IA consumes, is taking away from other societal needs, from households, making energy more expensive, also for companies. So this is a very vast mosaic of interests, vested interests, and then also people wanting to create something better. The contemporary reality is that even as ambition grows, the transition remains uneven, with developed and the developing worlds moving at completely different speeds. But while the government set the agenda, it is the industry that often determines the pace of that change. From corporate climate commitments to hard-to-abate sectors like cement, how is the industry responding? Here's what Andrew Pragg and Mahendra Singhi had to say. Mr. Pragg, glad that you could join us for a conversation. You work across sectors and geographies to make the accountability architecture of the transition more real in practical terms. What role can the Global South play in this transition? And most importantly, how can businesses bridge that financing gap for green innovation in this region? Yes, well, firstly, thank you so much for the invitation. It's a real pleasure to be here in Delhi and at the WSDS. We indeed are an international business coalition working to provide that structure and accountability, as you said, but also to make sure that the voices of those businesses that are really the leaders and the ones that see energy transition as their competitive future, that those voices are being heard in policymaking circles, be it internationally in the UN and elsewhere, but also domestically in countries, including here in India. So in terms of your question, what role for the Global South? We've seen this enormous shift in the last few years. We began as essentially a Global North coalition of organizations, but really the center of gravity has shifted in the economic space around energy transition, and now we see so much of the action happening across the Global South, including here in India. It's really striking when one arrives here, as I had the last few days, just to feel the sense of opportunity, the business sector really seeing so much opportunity for not just economic leadership, but also the sort of cementing a new position in this sort of changing world order that we're seeing, and that these energy transition technologies, the deployment of them, not just the deployment of them domestically, but also capturing the value chains, the manufacturing side, the sourcing, we see enormous potential for companies across Global South, and especially here in India, to really take advantage of that. And it's interesting when you ask how do businesses, how can they fill that gap? We're seeing so much enthusiasm from the business sector. We did a big business polling exercise last year, hundreds of executives around the world, and we found here in India, 99% of those we interviewed said that they really supported a fast transition to renewable electricity sources, provided that the policy flows, the policy structures back them up. And we saw similar across elsewhere in the Global South, 88% in Indonesia, 84% in South Africa. So the business sector is very much seeing this, but they, of course, have to recognize that business conditions are not always easy. The cost of capital can be high, the cost of electricity can be high. So, a big role for businesses to really make sure their voices are heard in getting the clear policy signals that they need to. Since you spoke about the renewables, let me direct the next question. Solar energy is now among the cheapest sources of new electricity, and electrification can scale on the back of falling technology costs, which creates opportunities for manufacturing expansion, but also for greater energy sovereignty. The question is, how do you see this development model of India offering lessons to the other emerging economies which want to adapt similar examples and perhaps see the similar kind of success that India has managed to in terms of adaptation, in terms of scaling the resources? Yes, no, it's a great question, and we certainly see a lot of potential for this kind of what you might call South-to-South cooperation, and using the exciting, quite inspiring story of India's journey on the energy sector in the last, say, 15 years as a model for other countries, because I think there's a lot of good examples we can see from firstly the clear direction of travel that the government gave here in terms of the national missions, and just that there was very much that clear sense of direction, and then translating that into stable policies at the right level, so at the state level, with reliable institutions to back them up, and the result was really quite
strong and rapid mobilization of private capital, domestic private capital mostly. So when you look across the rest of the global south, I think there's many lessons from that in terms of using these models where it's not a question of kind of fitting into the global north norms around policies, but really using the conditions where there may be shared experiences. So in the global south, where, for an example, cost of capital is higher, where energy access is a key issue, where grid congestion can be more of a problem than is in the global north, and where there's more fiscal constraints and so on. So using India's model with this very clear direction of travel, the scaling down to the state level policies, making sure it's stable and adapting to these particular conditions on the ground is something that we can really learn from. And I think we're seeing that happen very excitingly in East Africa. The Indian model of renewable auctions is now being rolled out there, and I think we could see much more of that kind of cooperation across the global south. How do you see the businesses determining the pace and the scale of the adoption of electrification, and through various aspects, through capital allocation decisions that they're undertaking, through the technology choices that they're making, most importantly, the supply chain transformation? Yeah, no, it's another great question. I think, well, firstly, electrification is something we're really excited about as an international coalition. We see, the growth in renewables, of course, has been stupendous around the world, including here in India. But to go really further, we need to absolutely be looking at what the demand side is doing, people buying more renewable electricity. And for that, we need to be electrifying these end uses. So cases where there are fossil fuels being used at the point of use in transport, in industry, in buildings and so on, to find electric solutions for that. So this is a really exciting area. How are businesses really sort of following that? Well, I think they do look for where the policy signals are clearest, and this is something else that came out from the polling results I mentioned before. We saw 50% of companies around the world said that they would be prepared to move countries, either their operations or their supply chains, in order to find policy frameworks that are more conducive to this transition. So I'd really emphasize this point of businesses look for where the policy direction is clearest, both in terms of the sort of big picture, the national plan for energy transition and for climate, and then more specifically where the incentives are very clear on the ground in terms of providing that room for investment in both the supply side of clean electricity, but also the demand side, and where the power market design is also set up well to facilitate this big switch to electric uses, so that power prices are kept lower, and that for the industries who want to switch to electricity, they see that falling cost of electricity rather than rising, because it's obviously a key factor in making this whole transition affordable. You've spent several years building one of India's most recognized decarbonization stories inside the cement sector. So, and now you bring that kind of experience, that rich experience, into Terry's work as a distinguished fellow. Talk to us and our viewers about where you see the Indian industry from back, say, 10 years ago to where it stands today. In terms of structural progress, where are we? How would you look back at that journey of progress? I'm so happy that in my 49 years being cemented in cement industry, last 25 years have gone for talking about, acting about, visioning about how sustainability can be brought in cement sector, how decarbonization can be done in cement sector. And I have been fortunate to work for two companies in past 25 years. One was Shree Cement and second is Dalmia Cement. Now, and particularly, I'm also very fortunate that Indian cement sector is fully focused on earlier on energy efficiency and now on decarbonization. And Indian cement sector was also one of the first sector globally to come out with a roadmap for decarbonization and then net zero. Now, if we look from last 10 years to now, I would say that earlier we had ambitions. Now we have started acting. And globally, the cement sector of India is being regarded as one of the most efficient in terms of energy efficiency, in terms of sustainability also. And I would also like to share that in a few years back, CDP had come out with the report on readiness of cement sector globally on low carbon economy. And the best part was that 5 of the
10 cement companies were from India, and Dalmia Cement was on the top. So that showed that Indian cement sector, though there was no regulations for it, no compulsion, no compliance, but because of our ethos also, because of our philosophy also, we all started acting on it. And today, proudly we do say that Dalmia Cement's carbon footprints are one of the lowest in the global cement world. Now, today the situation is we have to vision out, we have to think more of next 10 years. In fact, that's wherein I want to bring about the theme of the 25th WSDS. It puts the focus on transformations. In a hard-to-abate sector like cement, what will transformation look like? First, cement sector would be considered as possible to abate sector because we have hard to perform, hard to transform. Second one is that Dalmia Cement showed the way to global cement sector in 2018 and 2019, that when we declared our commitment of becoming net zero cement company by 2040, and that too in COP and UN General Assembly. And that also motivated other global cement companies, including India, to think of net zero roadmap. And in 2021, then companies came out that yes, this is how we would also be transforming. Now, India government has also taken a great leadership in climate change, and accordingly, the way they promoted renewable power, they promoted now various missions by which, you know, a lot of actions can be taken. So that is helping the cement sector also to now come out with the specific actions. Like many of the cement companies have 40 to 50% renewable energy usage, which you will not find globally. Similarly, now we have also started thinking that how we can use waste of municipal waste or the hazardous waste as a replacement of fossil fuel. And thirdly, the way we have been able to design our raw materials, our product mix, our technology, by which we have been able to use the waste like fly ash or the slag of steel company. And today, again, I would say that India produces 73% as a low carbon cement in comparison to a globe where it may be 20-25% only. So that shows we are concerned as a philosophy towards the material, towards the people, and the way we would be going ahead, not only Dalmia Cement, but other cement company also, and in addition to that, cement, steel and other companies also. And the way TERI has been supporting these initiatives by creating certain roadmaps, certain technologies, certain advocacy with the government, that is helping in a big way. Since you spoke about looking forward in the years to come, how do you see the role of the carbon capture, utilization and storage evolving between now to 2030 compared to the traditional, the direct emission reduction methods? Since we are talking of cement, so roughly 50% of the cement's emission comes out by burning limestone, and which emits CO2, and balance 50% comes from either the energy or scope 3 emissions. So for 50% capture, I think it was very important to develop this carbon capture and utilization technology. So Dalmia Cement committed in 2018 that yes, we would be working on it. We worked on the certain technology for which now time will come when we implement the project. But we could identify and highlight that this is the technology without which neither the sector can be net zero nor the country can be net zero. Now, last 3 years development have prompted and motivated government also, and Niti Aayog also supported it, that government came out with 20,000 crores budget for 5 years to support cement, steel and few other sectors for putting up new technologies for CCU or CCUS, as well create certain pilot projects which can be replicated henceforth. And we, as Dalmia Cement also, we are working, and few months back, Department of Science and Technology, they approved 5 testbed projects with the support of the government and the industry
to try the new technologies, which will also come into place maybe in few years, maybe 2 or 3 years' time. So I would say without this carbon capture utilization technology development, we would be able to net zero. At the same time, what we have been advocating and we will be practicing is that carbon is also a resource. So now we have to convert CO2, which is a waste or hated product, into a useful product. So by capturing, we'll be creating sustainable material like various chemicals, like various fuels, like methanol, etc. Given the kind of transformation that we have been able to take in this sector based on our policy roadmap, based on the technological help, based on the kind of collaboration that we've seen across sectors, what would you say could be the business case for investing in carbon capture in a high interest rate environment in the country? I would say that it can be a good investment case when it is also part and parcel of carbon credit mechanism. So like Government of India has already approved certain technologies by which one can go for CCU or CCUS, and that can be good project for carbon credits. So, but without carbon credit, it looks like that in next 3 to 5 years, it will not be a investment case, but it will be a sustainability case. So now important is that carbon prices may be say $50 to $100, and if that gets attached with the CCU project, then it can be a very good project, very investment project, and that will also prove our company's philosophy that clean and green is profitable and sustainable. Beyond policy and industry, there is a growing recognition of the role of people-led movements and also behavioral change. Speaking about the power of collective action and youth-led movements, Dr. Ash Pachauri shared his perspective. Climate action is not just about treaties and targets. It is as much about intergenerational responsibility. So how do the youngsters today look at the climate strategies? How do they shoulder this responsibility, and what do they expect of the current leadership, the current policymakers to do to ensure climate justice and also accelerate climate resilience efforts? To talk about some of these aspects and more, I'm joined by a young sustainable development strategist, Dr. Ash Pachauri. He's director at POP Movement and a speaker at the 25th WSDS. The focus this time is on transformations. So as a young sustainable development activist, strategist, what kind of transformations do you think is the need of the hour? Yeah, I believe that the role of young people is absolutely pivotal. And indeed, as being at the heart of this transformation, don't get me wrong when I say that youth alone are going to handle this. I think an intergenerational response is key. So the experience and wisdom that we have here at the WSDS, for example, with a lot of global leaders, with a lot of climate scientists, businessmen, and people from even civil society who have a lot of experience are key. But young people bring urgency. Young people are the ones who are going to live through this future. And therefore, I believe very strongly that young people are key to responses, because at the end of the day, climate action and the resilience we're talking about will be paved and will be crafted by those who live this future, this climate future we're talking about, and that is youth. So I just want to say that movement from incrementalism, we know will not get us where we're trying to get to. We will have to inject the urgency, and young people bring that. I also want to highlight that young people are very much a part of climate tech today, entrepreneurship, responses in terms of agriculture, circular economy. And what we need is young people to move away from microphones and tokenism to really mainstream. So how can young people become part of policy decision making? How can young people become part of formulating budgets and decisions around how adaptation can be funded? Because at the end of the day, all of this will be talk unless we put the finance behind it to be able to translate that resolve into accelerated action. And that's what we need.
And therefore, I think the role of young people and the intergenerational approach is very, very key. We need youth to move forward. You're absolutely right, but the conversation that we're having today, despite so much action that is required on part of the world, the policymakers, when it comes to strengthening our climate mitigation and climate resilience efforts, we live in an uncertain geopolitical world. There is fragmentation, there's volatility, and it seems the conversations and the urgency around climate efforts have taken a backstage. How can we mainstream them once again, bring the focus back once again, and which are the areas that we need to urgently prioritize? Yeah, so this is a great question because, we see this as a conflict. How do we address climate change and at the same time talk about the geopolitical consequences and circumstances that we're facing? How do we deal with economic development and be able to tackle climate action? The point is that really these things are complementary. The real question is, what are the costs of delayed action, not what are the costs of action? Okay, so I think that being able to bring in science in guiding that action is key. How can youth be inspired by knowledge? How can we bring climate literacy into educational systems so that they become mainstream, so that they become a part of not just a conversation in a room, but really action in terms of lived realities on the ground? At the end of the day, that change that we're talking about making, and we have a shorter and shorter window of opportunity to make that change. Are we going to deal with this as a lost opportunity, or are we going to seize this opportunity? And I think it's about taking up this moment to seize that opportunity, and we're going to be able to do it only by bringing about changes in cities, on the ground, at local level. And therefore, what action we'll have led by youth and communities will be very, very key. We live in a very uncertain time. We don't know what's going to happen tomorrow. The urgency is there. You spoke about the priorities, but what's important is not just action, but timely action. Are you more concerned, or are you more hopeful about how we are proceeding towards addressing this big challenge that the planet and humanity faces today? Absolutely. Hope is a strategy. I believe hope is an intervention. And you know what? Young people are able to identify the integration, the move from incrementalizing action to integrating partnerships, health, equity, economic development, peace. All of these things are connected. We can't talk about geopolitics and inflation, economic challenges and climate, the climate crisis without understanding that equity, inclusion, all of these things are interlinked. So really, I think it's about that vision. And if we don't have that vision, there is no hope. The point is that youth have the ability to be able to see this. Youth are hope. And hope is that strategy and intervention. And that's what our present and our future is. A recurring theme when it comes to climate action remains who pays and who bears the cost of inaction. On the critical issues of climate finance, equity and responsibility, Professor Benito Mueller offered his insights. Do you believe that in the climate negotiations that are taking place now, issues of equity and fairness are now coming from the margins to the mainstream? Have we been able to bring that kind of change in conversations around climate change and climate action? I mean, I have worked, I started as a philosopher, so I started working on climate justice and all. I have moved away from pounding the justice and the liability and you're responsible, not us, because it's not getting us anywhere. So my narrative, I hate that word, it's usually fairy tales, but has switched from climate justice to solidarity, right? We need to show solidarity at the individual level, at the state level, particularly with those countries like small island states, least developed countries, and anyone who has the means and the willingness, it should be done now.
and not wait for 50 years or something. So in that context, especially the developing countries often have concerns between the gap that persists between climate promises and climate delivery. And this can be attributed to several factors: lack of resources, lack of intent, lack of political will, most importantly, lack of finance. Where, according to you, is the biggest disconnect today? Because all of these aspects are part of conversations, but are we getting anywhere? Well, again, these things like finance, action, they're all related, obviously. I mean, it's a truism. So I wouldn't want to focus on any one of them as being the gap, action. But the point is that we have to find ways in which we can address the issues. We have to be creative to some extent, right? To do stuff. I'll give you an example. Technology transfer. It's an age-old thing in the whole, you know. I mean, and it was always, oh, you in the north, you have to, you know, give us money so we can get the licenses. And now I'm looking with friends in the Caribbean and things. The idea of bulk purchasing. You know where I got the idea? Here in India. Remember Ujala, the program? I was amazed, okay, when the price of the LED bulbs collapsed to 1/10. And that was, I mean, obviously small island states don't have the financial power to do that, but if they get together and do it together, they can. And it's them in the driving seat, not begging, but actually using economic forces to get what they need, right? So we need to rephrase and reframe the whole thing a little bit. Since you mentioned India and the manner in which our policies have shaped up towards benefit for all, we've tried to become representatives of the Global South, especially in context of bringing their concerns to the global table. How do you see India's evolving role in matters of equity in the climate context, trying to give a voice to countries which are not responsible directly for what we are going through, but are bearing the maximum brunt of the climate change? Well, the first thing which is important is that without the multilateral system, there would be no even talk about equity. You know, if we have the G20 or the 20 largest emitters and things, they would just do it themselves, and they wouldn't care about the little guys because they're not at the table. In the UN system, everyone is at the table, right? And so it's important that we keep the multilateral regime going. As far as the champions for I think it would be great if India takes up that role. I mean, it has done for some time, and then it was sort of a bit more wobbly when it wanted to be part of BASIC and all. You know, all these sort of big clubs are not necessarily where the little people are represented, the AOSIS. But so there's a definite chance for India to step up again and become the champion of the small ones. Finally, sir, as as an important voice in the global conversations around sustainable development, how optimistic are you in terms of where global diplomacy stands today? Are you more concerned, or are you more optimistic the manner in which countries like India and many others are trying to carve out a different way, try to give alternatives to the developing world as to what can be done, which can finally then percolate to the larger good of mankind? Well, I mean, one thing which is quite clear, my dear friend who passed away sadly, Salimul Haq from Bangladesh, always said, you know, people, in terms of adaptation, we can teach everyone of what can be done, even the developed countries. So it's wrong to think that the flow of knowledge always is north-south, right? It's just, so what I think we need are more sort of forums where decision makers from all over the world can meet each other and exchange experiences. The current negotiations are unfortunately just that, negotiations. We still need some negotiations, but far less. We're not going to do another treaty. We have the Paris Agreement. But we can use the time as a meeting place for adaptation practitioners to just exchange.
without an outcome, a formal outcome, a negotiated sort of paper at the end. No, just people learning from each other, north, south, all over the place. Professor, it's been a delight to hear Thank you talk about where we are in terms of the progress, but what we ought to do, because the time is running out and our actions have to be accelerated in the times to come. Thank you so much for taking our time. My pleasure. To us. Thank you. Thank you so much. Thank you. The message from the WSDS 2026 was clear. The transformation is underway, but it is uneven and urgent. The road ahead will demand not just our vision, but collaboration, not just commitments, but accountability. And perhaps most importantly, the shared belief that sustainable development is not a choice, it is the only viable future. That's it from us on this telecast. Thank you for your time. विधायिका और विधायी कार्य अपने में एक महान उत्तरदायित्व के परिचायक हैं। इस उत्तरदायित्व का निर्वाह निर्बाध रूप से तभी किया जा सकता है जब विधायी प्रारूप यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट त्रुटिहीन हो। विधायी प्रारूपण यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विधायक पदार्थ यानी सब्सटेंस और प्रारूप यानी फॉर्म दोनों को सही रूप में साधने का प्रयास करते हैं। तकनीकी त्रुटियां आमतौर पर मूल कार्य से समझौता करती हैं। मूल त्रुटियां तकनीकी कार्य को हताशा की कवायद में बदल देती हैं और अदूरदर्शी प्रक्रियाएं सब कुछ कमजोर कर देती हैं। इसलिए लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। विधायी प्रारूपकार यानी लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग करने वाले कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं और उनका ये उत्तरदायित्व लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है। विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमनों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकार का सबसे शक्तिशाली अंग संसद है और इसकी ताकत कानून। विधायी मसौदा किसी भी देश को अच्छी तरह से चलाने की सबसे महत्वपूर्ण विधा है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग यानी विधायी मसौदा एक गतिमान प्रक्रिया है, लिहाजा इसे तैयार करने के कौशल में वृद्धि होती रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कानून की महत्ता कमजोर होती जाएगी। बदलते दौर में कानून और उसके मसौदे में बदलाव समय की मांग है। भारत जैसे लोकतांत्रिक परंपरा वाले देश में इस पर ध्यान दिया जाना बेहद आवश्यक है। विधायी मसौदा कोई विज्ञान या कला नहीं है, बल्कि एक कौशल है जिसे भावना के साथ जोड़कर लागू करना होता है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें ग्रे एरिया यानी अपरिभाषित कुछ भी नहीं होना चाहिए या फिर उसे कम करने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और कानून सुस्पष्ट हो ये तय किया जाना चाहिए। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये विज्ञान नहीं है और लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कला भी नहीं है। लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग कौशल है जिसको आत्मा के साथ जोड़कर, स्पिरिट के साथ जोड़कर लागू करना है। तो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, आपको पढ़ाए जाएंगे रूल्स, मगर वो सभी रूल्स से ऊपर संविधान के स्पिरिट को समझकर उसको जमीन पर उतारना वो आपका काम है। इसके साथ साथ संविधान की स्पिरिट हम तभी समझेंगे जब अच्छी जानकारी संविधान की होगी और ग्रे एरिया को मिनिमाइज करने पर हमेशा ध्यान रखें। बीते 9 सालों में कानून के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। मोदी सरकार ने देश हित में कई समय अनुकूल कानून भी बनाए हैं। 2000 अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त कर दिया है। समाज और अदालतों को कानूनी जाल से मुक्त किया है।
अनुच्छेद 370 संविधान का अस्थायी प्रावधान था। संविधान निर्माताओं ने इसे समझदारी से वहां रखा था। बहुत सोचने के बाद संविधान में अस्थायी शब्द डाला गया। अस्थायी शब्द डालने से कश्मीर से धारा 370 हटाना आसान हो गया। विधायी प्रारूपण हमारे लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधायी प्रारूपण के बारे में जानकारी का अभाव कानूनों और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। विधायी प्रारूपण में त्रुटि न्यायपालिका के काम को भी प्रभावित करती है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए विधायी प्रारूपण बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ विधायी प्रारूपण का कौशल हमेशा उन्नत, विकसित और कुशल होता जाना बेहद आवश्यक है। विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विधायी मसौदा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। विधायी प्रारूपण किसी भी देश को अच्छे तरीके से चलाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। विधायी प्रारूपण विज्ञान या कला नहीं, बल्कि भावना के साथ लागू किए जाने वाला कौशल है। इसका फोकस हमेशा ग्रे क्षेत्रों को कम करने पर होना चाहिए और कानून स्पष्ट होना चाहिए। संसद और जनता की इच्छा को कानून में तब्दील करते समय संविधान, रीति रिवाज, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, शासन व्यवस्था, समाज, देश के सामाजिक आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ड्राफ्टमैन की भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विधायी प्रारूप में भाषा की भावना को प्रतिबिंबित करना बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं अनुभव ही सच्चा ज्ञान है। आज मैं आपको एक अनुभवी व्यक्ति से मिलवाने के लिए लाया हूं मथुरा के पास महुवन गांव में। स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और ये महुवन में आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं जिसने अपना काम मजदूरी से किया, कारीगरी से किया और वो बढ़ई का काम करते थे। बढ़ई का काम करते करते उन्होंने टेंडर लेने शुरू किए, बड़े काम करने शुरू किए और बड़े काम करने के बाद में फिर उन्होंने कुछ लोहे का काम शुरू किया और इसी के साथ फिर उन्होंने
तय किया ग्रीन इकोनॉमी में कदम रखने का, खेती करने का। तो बाग लगाए, बाग के साथ में उन्होंने मशरूम फार्मिंग का काम शुरू किया। सफल आदमी को उसकी कहानी को सुनना, ये खुश होना और उसके नक्शे कदम पर चलना, ये एक बात है। लेकिन जो आदमी संघर्षों में, अनुभवों में और खट्टे मीठे अनुभव दोनों और कड़वे भी दोनों तरह के अनुभवों से होकर गुजरा हो, उसकी कहानी को सुनना और उससे सुनकर कुछ सावधानियां बरतना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका प्रोडक्शन और आपकी जो ईएमआई है, दोनों के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। पता चला कि प्रोडक्शन आया नहीं और ईएमआई शुरू हो गई। ये सारे जो खतरे हैं, ये जो सारे जो संकेत हैं, इनको समझकर इंद्रजीत सिंह ने क्या क्या सावधानियां और रखने की जरूरत है, उसे हम उनसे समझेंगे। मेरा फर्नीचर का काम था, बहुत अच्छा काम था और उसमें मैं संतुष्ट भी था। ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन मैं कुछ हटके भी करना चाहता था। ये मशरूम के काम के लिए आपने कब शुरुआत की? ट्रेनिंग आपने कब ली? ये मैंने ट्रेनिंग ली थी 2017 में। अच्छा। फिर दूसरी बार ट्रेनिंग ली 2019 में। 2 बार ट्रेनिंग ली थी मैंने। तो जो ट्रेनिंग ली और जो ज़मीन पर आपने काम यहाँ किया, दोनों चीज़ों में कुछ गैप दिखा? बहुत गैप मिला था। ट्रेनिंग का क्या होता है, वो 8 दिन के लिए ट्रेनिंग रहती है और जो हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं वो सच्चा ज्ञान उसी से मिलता है। हम लोग मेहनत करके उसके लिए कितना दिन लगता है? अपने काम में करने के लिए जैसे शुरुआत में करोगे ना, तो कई महीने लग जाएंगे उसको सीखने में। अच्छा जी। आपको लगता है 3-4 महीने या उससे भी ज़्यादा? 3-4 महीने तो मिनिमम मान लीजिए। तो ये 4 महीने करीब उसमें लग सकते हैं। लेकिन इस काम की जब आपने बैंक के पास आप गए, आपने प्रोजेक्ट लिया, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसकी कॉस्ट, इसमें इतना गैप क्यों आया? सर मैं एक चीज़ इसमें बीच में कहना चाहूँगा। कई बार हम लोग बैंक में जाते हैं ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के, तो जो नए काम होते हैं, हमारे बैंक के जो कर्मचारी रहते हैं उनके एक दिमाग में पुराने काम है, उनके लिए तो उनके दिमाग बना होता है कि इसको ऐसे इस तरीके से करते हैं। हम लोग जो नया काम लेके जाते हैं तो उनको खुद समझ नहीं होती है। जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी ज़्यादा की आ गई, बनी आ गई। जैसे हमारी ये वाली प्रोजेक्ट पहले थी 1,62,00,000 रुपये की, तो बैंक वालों ने बार बार मैंने कर दिया कि नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मशरूम का काम कोई पता नहीं है, नया काम है, चला नहीं चला। तो फिर मैंने उसको रिवाइज करवाया, फिर मैंने 1,16,00,000 के लगभग ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई। तो तब उनसे फाइनेंस कराया। फाइनेंस में भी मुझे लगभग 2 साल लगा दिए इन्होंने। जिस भी जाते थे तो मना कर देते थे, कहते थे कि नहीं आप इसमें ये नहीं कर सकते हो, हमें जानकारी नहीं है। और सरकारी जो काम होते हैं सब्सिडी वाले, वो कभी प्रोजेक्ट चलते ही नहीं है। तो मेरा काम मानना ऐसा है कि कभी कभी बैंक की कमियों की वजह से भी ये प्रोजेक्ट बंद होते हैं। लेकिन मैं इससे उभर करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपने जो मेरे साथ गलत किया है ना, मैं इसको चला के दिखाऊंगा। कई चीज़ों का लॉस हुआ है, मैंने प्रॉपर्टी भी बेच दी, लोगों से पैसा ले लिया, मेरी भैंसें भी बिक गई, तब भी मैं चला रहा हूँ। आज आपका प्रोडक्शन कितना आने वाला है? आज की डेट में लगभग 800 से 900 केजी मशरूम निकलेगा मार्केट में जाने के लिए। और क्या रेट मिलेगा? 145 रुपये केजी में मैंने 700 केजी का ऑर्डर लिया है सुबह। अच्छा। और लगभग 200 केजी का मैं अभी और ऑर्डर लूँगा। जो रिटेलर हैं उनसे अच्छा रेट मिलता है। 500 किलो को अगर आप लगाएं 150 के हिसाब से, तो सीधे 75,000 के आसपास बनता है। मुझे लगता है 1-आध लाख रुपए के आसपास बना हो। बिल्कुल बनेगा सर। जैसे अभी 200 केजी मेरा और जाना है। 200 केजी जो जाएगा वो कुछ उसमें 190 रुपये भी जाएगा, कुछ 180 रुपये रेट का भी जाएगा। तो आपका अंदाजा है आज का आपका ऑर्डर 1 लाख के ऊपर जाएगा? 1 लाख से ऊपर जाएगा मेरा। आज का दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा तो मैं धन्यवाद दूंगा आपके लिए और पूरी मीडिया बंधु आपकी जो टीम है, इसके लिए बार बार हाथ जोड़ के धन्यवाद दूंगा। दिल की गहराइयों से दूंगा कि आप मेरी बात को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुझे परेशानी आई तो वो सामने किसी को नहीं आनी चाहिए। तो एक तो बात यह है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको समझा जाए। प्रोजेक्ट मेकर जो हैं, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने वाले जो लोग हैं, वो ये समझें कि भाई कॉस्ट कहाँ कहाँ बढ़ सकती है, क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। और ये रिस्क एक फैक्टर बताया भी उन्होंने कि ये रिस्क आया
कहां पर आया कि जब 35 लाख रुपया बिना प्रोडक्शन के ही बैंक को ईएमआई के तौर पर दे दिया गया। राइट? थैंक यू सर, बिल्कुल राइट है। आपको ट्रेनिंग के बाद भी आप कहीं किसी मशरूम ग्रोअर के अंडर में 5-6 महीने 4 महीने कम से कम 3 महीने तो खुद बिताइए, और उसके बाद तब फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है आप उसको एक्यूरेट बनवाने की कोशिश कीजिए। ये आपका कितने चैम्बर का वो है? मेरा 4 चैम्बर का है। मतलब 4 चैम्बर का जो ये सारा सिस्टम है, ये करीब जो है 2.5 करोड़ में पड़ता है। 1 करोड़ 16 लाख रुपए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें बनी थी। आपने अब इसकी हैंड होल्डिंग सीधे अपने हाथ में ले ली है, अब आप खुद ग्रोअर की तरह काम कर लेते हैं। जी, मैं अब तो जिस समय से मेरा लॉस हुआ है, कई चीज़ों पे लॉस हुआ, जैसे ग्रोवर मेरा लॉस करके चला गया, तो फिर उसके बाद में मैं स्वयं ही कर रहा हूँ, और स्वयं का जो अनुभव है वही काम में आता है। आप ग्रोवर तो कुछ तो ऐसे तुक्के मारी होते हैं, पानी लगाना सीख गए, अब मुझे तो पता नहीं, इसका कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है। वो वहाँ से आके कहेगा साहब मैं ग्रोवर हूँ, पानी लगाने वाला वहाँ पे था, मेरे यहाँ के ग्रोवर बन जाएगा, तो वो लॉस करके वो चुप से भी निकल जाएगा, बताएगा भी नहीं कि मुझे जाना है। चुप। ग्रोवर को कितनी सैलरी पर रखा आपने? ग्रोवर को मैंने सैलरी पर रखा था, 40,000 रुपये महीना था, प्लस खाना था। इसका अगर हम पूरे साल का साइकिल निकालने की कोशिश करें, 125 रुपये के हिसाब से 1 करोड़ 35 लाख के आसपास हो जाता है। इसमें से कितना % हम मान लेते हैं खर्चे अगर परसेंटेज करते हैं तो लगभग हम लोगों को 40% के आसपास बचत हो जाती है। 50-48 लाख रुपए की बचत हो जाती है इसमें। कुल मिलाकर बात समझ में आती है कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो कम पैसे की बनी, और एक्सेस पैसा जो इसे चलाने के लिए चाहिए था वो थोड़ा अरेंज करना मुश्किल हुआ, और इसलिए ये सारी की सारी परेशानी आ गई। वरना अभी ये सारे खर्चे काटने के बाद में सालाना इन 4 कमरों से 50 लाख रुपए की शुद्ध बचत वो ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने मशरूम का अपना ये मॉडल शुरू किया है। इनके 3 बेटे हैं, पत्नी हैं, और ये सब लोग मिलकर के इस काम को अब अपने हाथों से चला लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पानी नहीं भरा हुआ है, बारिश का पानी नहीं भरा हुआ है, ये यहाँ पर मशरूम को तैयार करने के लिए जो कंपोस्ट तैयार होता है उसकी फर्स्ट प्रोसेसिंग का पार्ट है, और इसके बाद यहाँ से ये इन बंकर्स में जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये क्यों पानी भरा गया है, इसको अजय जो हैं, इंद्रजीत जी के सुपुत्र हैं, वो इसमें खूब दिलचस्पी लेते हैं, वो हमें बताएंगे। ये जो पानी भरा हुआ है ये लगून एरिया बोलते हैं। इधर क्या किया जाता है, भूसे को लगभग 4 से 5 दिन भिगाया जाता है, जिसमें ये पानी सॉसरनुमा शेप होता है, तो ये प्लेट जैसा। हाँ, प्लेट जैसा। इससे आसानी होती है भूसे को भिगाने में। और फिर इसमें इसी एरिया पर हम जो कंपोस्ट बनाते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसमें काफ़ी मटेरियल होते हैं, खल, चोकर, यूरिया वगैरह, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इधर ईप बना देते हैं, डैम्प कर देते हैं। 2 से 2 दिन का गैप देते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर आ जाए, 80 से 85 डिग्री का टेम्परेचर आता है। उसके बाद हम इसको इधर बंकर में शिफ्ट कर देते हैं, बंकर में शिफ्ट कर देते हैं। ये बंकर आप देख रहे हैं, और बंकर के ऊपर आप खाद भी देख रहे होंगे, और ये जो कंपोस्ट है, इस कंपोस्ट के ऊपर जो ये भाप उठ रही है, ये जो निकल रही है गैस, ये क्या है? ये अमोनिया है। अमोनिया। तो यहाँ पर इसे कब तक रखा जाता है? ये इसमें क्या प्रोसेस? इसमें एयरोबिक फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें नीचे से एयर दी जाती है, एयर पास करी जाती है, ये जो बंकर होते हैं। तो इसमें जो ब्रेक डाउन होता है उसका बाय प्रोडक्ट निकलता है ये अमोनिया। तो ये फिर हम यहाँ जैसे मान लीजिए 1-1 दिन के गैप पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं, 4-5 पलटियाँ देते हैं। आप कह रहे हैं कि ये इसमें भरा गया है तो 1 दिन इसमें रहेगा, अगले तीसरे दिन जो है इसको इसमें डाल दिया जाएगा, फिर अगले दिन इसमें रहेगा, फिर तीसरे दिन फिर इधर, ऐसा 4 बार किया। हाँ। तो उसके बाद फिर जैसे हमारा 14-15 दिन हो जाते हैं, उसके बाद हम इसको टनल में शिफ्ट कर देते हैं। टनल में कितने दिन? टनल में ये 6 दिन रहता है, 7वें दिन इसकी बिजाई होती है। इसमें पैस्चराइजेशन होता है टनल में। ये आगे का प्रोसेस। मतलब पॉस्चराइजेशन का मतलब ये है कि अब ये कंपोस्ट पूरी तरह से विशुद्ध होता है, इसमें किसी तरह का कोई कीट, कोई कीटाणु, जीवाणु नहीं रहता है, ये प्योर कंपोस्ट होता है। 6 दिन रहता है, 7वें दिन बिजाई होती है इसमें। तो 7वें दिन फिर क्या करते हैं उसको? पॉलीथीन में इसको 7वें दिन ऐसा करते हैं, इधर से निकाल के स्पॉनिंग एरिया में निकालते हैं। स्पॉनिंग एरिया में इसको फैला देते हैं, उस पर फिर स्पॉन डालते हैं। फिर उसके 10 से 12 किलो का पॉलीथीन भरते हैं
कंपोस्ट का, उसको क्रॉपिंग चैम्बर में शिफ्ट कर देते हैं। तो स्पोन की मिक्सिंग भी होती होगी? हाँ जी, उस रेशियो में होती है स्पोन की मिक्सिंग, लगभग 1 क्विंटल पे 900 ग्राम। अगर 1 क्विंटल कंपोस्ट है तो उसके ऊपर जो स्पोन जिसे कह रहे हैं आप, उसे आसान भाषा में बीज समझिए, तो 1 क्विंटल पर 900 ग्राम बीज लगता है। बिल्कुल। और वो ऐसे फैलाकर मिक्स करके और पॉलीथीन में भरकर और उसके बाद उनको उन चैम्बर्स में ले जाया जाता है जो पूरी तरह से एसी, फुल्ली एसी हैं। वहाँ एसी नहीं बोलेंगे, इसको टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट बोलेंगे। अच्छा। हाँ जी सर, इसमें सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, मॉइस्चर, टेम्परेचर और अपना गैसेस का लेवल, जैसे CO2 हुआ और ऑक्सीजन हुआ, ये सारी चीज़ों को। तो चलते हैं टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट में। आमतौर पर मैनुअली जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसमें 28 से 30 दिन लगते हैं, मगर यहाँ पर जिस आप प्रोसेस से देख रहे हैं उसमें 20 दिन में आपका कंपोस्ट तैयार होकर के जो यूनिट है उसके अंदर चला जाता है और आपकी जो प्रोसेसिंग है मशरूम बनने की वो शुरू हो जाती है। लेकिन इन सब के ऊपर भी मशरूम ऐसे ही नहीं आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह का नाम क्या है? यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं, ये भुरभुरी खाद टाइप, ये क्या है? इसको अजय एक बार बताएंगे। इसको हम केसिंग मटेरियल बोलते हैं। ये जो हमारे कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट में माइसीलियम रन के बाद ये ऊपर से लगभग 1.5 से 1.25 इंची की बिछाई जाती है, जो कि मशरूम को, जो माइसीलियम होता है, ट्रिगर करता है फ्रूटिंग बॉडी बनाने में, जिसे हम मशरूम बोलते हैं। और इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होते हैं, 0। तो इसमें जो हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोकोपीट है जो हमारा मेन लगभग 70 से 75% होता है, और फिर इसमें हम जो गाय का या भैंस का जो भी है गोबर होता है, लगभग 2 से 2.5 साल पुराना यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 साल पुराने गोबर में न्यूट्रिशन ना के बराबर हो जाते हैं। मतलब इसलिए आप इसमें गोबर गैस की स्लैरी या वर्मी कंपोस्ट यूज़ नहीं करते? हाँ जी सर, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट और गोबर गैस की स्लैरी होती है उसमें न्यूट्रिशन होते हैं और इसमें न्यूट्रिशन ना के बराबर होने चाहिए। तो ये केसिंग का कमाल है। और केसिंग 15 दिन उसमें रखने के बाद अगर आप इस भुरभुरी खाद को उसके ऊपर 2 से कम 1.5 इंच की लेयर नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी मशरूम ग्रो नहीं होगी। इसके बिना मशरूम निकल ही नहीं सकती। एक बैग आपका 10 kg का जो होता है? हाँ जी सर। और इसका जो बोला जाए, ये केवल हर नस्ल के जो मशरूम होते हैं उसके ऊपर यूज़ नहीं होता। ये कुछ ऐसी नस्ल हैं जिन पे बगैर केसिंग के नहीं आता मटेरियल। उसमें बटन मशरूम भी है? हाँ, उसमें बटन मशरूम है। ऑयस्टर? हाँ नहीं, ऑयस्टर नहीं। अच्छा। ऑयस्टर नहीं है, ऑयस्टर में बगैर केसिंग के आ जाता है मटेरियल। लेकिन जो बटन मशरूम है उसमें केसिंग ज़रूरी है। और केसिंग एक ही बार होती है? हाँ जी सर, एक ही बार केसिंग होती है। फिर उसके बाद जैसे हम मशरूम तोड़ लेते हैं, तोड़ने के बाद हमें समय समय पर थोड़ा थोड़ा कवरिंग करना पड़ता है। हर फ्लश पर तोड़ने के बाद जो गड्ढे बन जाते हैं उनमें कवरिंग की जाती है। मतलब ये केसिंग की कवरिंग करने के बाद ही आपको मशरूम का बम्पर प्रोडक्शन मिलता है। कैसा होता है वो बम्पर प्रोडक्शन, आइए देखते हैं। अब हम जो हैं एयर हैंडलिंग यूनिट में खड़े हैं, जिसको AHU कहा जाता है। ये पब पैनल हैं, ऊपर पब पैनल हैं, इसकी कितनी फ्लोर हैं ये सब अजय बताएंगे। और यहाँ पर हमें अजय ने ये भी बताया कि 3 स्टेजेस यहाँ पर हैं। ये कौन सी स्टेज है और इसे क्या कहा जाता है? जी सर, ये जो हमारा जो चैम्बर है इसमें AHU यूनिट लगी रहती है। AHU में नहीं खड़े हम एक्चुअली सर। ठीक है। और इसमें सर ये अभी हमारा जो कंपोस्ट है ये स्टेज में माइसीलियम रन स्टेज में चल रहा है। जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको। हाँ। ये जो वाइट धागा सा चल रहा है इसमें, बिल्कुल, ये माइसीलियम होता है। ये अब पूरी तरीके से इसमें चल चुका है। इसको लगभग 12 से 15 दिन हो गए हैं। ये माइसीलियम फैल चुका है इसमें। अब इसमें केसिंग करने की बारी आ चुकी है। मशरूम ऐसे ही पैदा नहीं होगी? नहीं, अभी इस पर केसिंग होगा, फिर उसके बाद मशरूम निकलेगा। ये दूसरी स्टेज में केसिंग हम आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये दूसरी स्टेज है। इस दूसरी स्टेज पर अब ये पन्नियाँ खोल दी गई हैं। इसे क्या कहते हैं ये भी अजय हमें बताएंगे। जी सर, ये केस रन की स्टेज चल रही है। इसमें जो आपने देख रहे होंगे, इस पर हमने केसिंग डाल दी है लगभग 1 से 1.5 इंची। और उस पे देखिए ये माइसीलियम दिख रहा होगा आपको, ऊपर आ चुका है, वाइट दिख रहा होगा आपको। हाँ। इसको लगभग 7 दिन हो चुके हैं केसिंग करे हुए। तो केसिंग करने के बाद अब ये 7 दिन हो चुके हैं,
तो इसमें माइसिलियम आ चुका है। अब इसके बाद इसमें एक और प्रोसेस होगा जिसे बोलते हैं रफलिंग, रफलिंग के बाद फिर कवरिंग, उसके बाद मशरूम आएगा, वो हम आपको अगली स्टेज में दिखाएंगे। ठीक है। और ये 15 दिन बाद ये आपने केसिंग की है इस पर? हाँ जी सर, 15 दिन बाद केसिंग करके, और आज इसको 7वां दिन हो चुका है केसिंग करे हुए। और रफलिंग क्या होता है? रफलिंग सर, इसको जैसे अभी इसमें आपने देखा होगा, जैसे ये इवनली ये चला हुआ नहीं है, जैसे कहीं वाइट है, कहीं वाइट है, कहीं काला पड़ा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम इस तरीके से रफलिंग करके इसमें मिक्सिंग जैसा। हाँ, ये माइसिलियम जो चला हुआ है इसको चारों ओर मिक्स कर देंगे, जिससे क्या होगा इसमें चारों ओर माइसिलियम पहुंच जाएगा, और माइसिलियम पहुंचने के बाद इसमें इवनली मशरूम आएगा, सारे पर एक सा मशरूम आएगा। तो इसके बाद में अगली स्टेज जो है, तीसरी स्टेज, वो ग्रोइंग की है। मशरूम आ चुका होता है, फ्रूटिंग है। ये फ्रूटिंग की स्टेज है, और इंद्रजीत का पूरा परिवार जो है वो इस काम में लगा हुआ है। अभी तक अजय जो मशरूम ग्रोवर के तौर पर हमारे साथ में थे, और उन्होंने कितना अच्छा मशरूम पैदा किया है। इसका साइज इससे भी डबल या उससे ट्रिपल भी है, और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। 7 लेयर इधर हैं, 7 लेयर इधर हैं, स्टेप्स, और 56 फीट की लंबाई है, और 18 फीट की चौड़ाई है। और एक दिन का इससे जो मशरूम है वो निकल रहा है 900 किलो तक, जिसका अमाउंट करीब बन रहा है 1.25 लाख रुपया। ये एक बार जब आप कंपोस्ट डाल देते हैं तो कितनी बार निकलता है? इसमें लगभग हम 2 से 3 फ्लश लेते हैं, और एक फ्लश लगभग 4 से 5 दिन चलता है। ऐसा होता है, स्टार्टिंग के जो फ्लश होते हैं उनमें यील्ड ज़्यादा आती है, 900, 800, 900, 1000, 1200 भी आ जाती है, 1400 भी आ जाती है। लेकिन जैसे जैसे लास्ट होते चले जाते हैं, सेकंड फ्लश में थोड़ा कम होता है, थर्ड फ्लश में उससे भी कम हो जाता है। थर्ड फ्लश में लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपका निकलता है 200 किलो, 300 किलो, 400 किलो पर डे का। बिल्कुल। तो औसत जो है वो 600-700 किलो का बनता है एक फ्लश। हाँ जी सर, औसत 600-700 किलो का बन जाता है, और हमारी जो फार्म की यील्ड है पर डे की, वो हो जाती है हमारी लगभग 250 से 350 केजी। वो तो पर डे की हो गई औसत। अजय की माताजी भी यहाँ पर हैं, और ये पूरा एक परिवार है जो संस्थान की तरह से काम कर रहा है। जो भी काम आता है करती हूँ मैं, कटिंग का आता है वो भी करती हूँ, हाथ बटाती हूँ, और पैकिंग भी करती हूँ। हाँ, तुलाई भी करती हूँ, पैकिंग करती हूँ, और जो भी काम आता है करती हूँ। इसमें कितनी महिलाएं हैं आपके साथ में? अब इस टाइम 7-8 तो हैं मेरे पास। यहाँ पर एक और इन सब में हेड हैं, रूबी। आपने ये सब जो कटिंग करना किससे सीखा, किसने सिखाया आपको ये सारा काम? मैं जब शुरुआत में आई थी तो मुझे आंटी ने बताया था कटिंग करना क्या कहते हैं, तो मैं एक ही बार में समझ आ गई थी मेरे क्या कहते हैं। चाकू से करते हैं या कैंची से? नहीं, चाकू से करते हैं। ये आदमी गलत कटिंग कर रहा है, इसका आपको कैसे पता लगता है? नहीं, वो मैं चेकिंग करने आती हूँ। जरा दिखाइए तो, ये एकदम सबसे ठीक कटिंग क्या होती है? सबसे ठीक कटिंग होती है, जैसे कि मशरूम है, इसे यहाँ से यूँ घुमा के निकालो ना, तो इसकी यहाँ पे गोल कटिंग होती है यूँ, और ये फिर बाकी क्रेट में रखा जाता है। ये थोड़ा सा ऐसे घुमा देंगे तो आपको कंपोस्ट नहीं आएगा। देखिए, मेरा एक ही हाथ लगा हुआ था, इसलिए मैंने घुमाया, फिर भी कंपोस्ट कम आया है। तो पैकेजिंग कैसे होती है ये देखते हैं और समझते हैं मशरूम के पूरे गणित को। खेती में युवा भारत रुचि ले रहा है, वो खेती इनोवेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर आप मशरूम की पैकेजिंग देख रहे हैं, इसमें ग्रेडिंग है, पैकेजिंग है। तो ये जो सारा काम है आपका, इस काम को आप कैसे देखते हैं? ये क्या क्या जो चल रहा है? सर, ये यहाँ पर हम पैकेजिंग कर रहे हैं, शॉर्टिंग ग्रेडिंग है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये जो मशरूम अंदर से कट कर आया, अब इसका हम पैकेजिंग कर रहे हैं। तो इसमें ये हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, पहले साइज के हिसाब से, और जो कुछ इसमें बी ग्रेड माल होता है उसको अलग करना, और फिर ये साथ में ब्लोअर चल रहा है, ब्लोअर से सफाई करते हैं। ब्लोअर से सफाई करने में हमें ये फ़ायदा रहता है, इसमें हम जो सफाई कर रहे हैं इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं लगा रहे हैं, तो ये हेल्थ कॉन्शियस है, बढ़िया है हेल्थ के लिए। अगर आप मशरूम खरीद रहे हैं और उस पर थोड़ा बहुत ये केसिंग का, जो ये कोकोपीट का या नारियल का जो बरूदा होता है वो अगर नहीं लगा है, तो इसका मतलब हो सकता है उसे केमिकल में धुला गया हो। अभी भी मशरूम की भारत में कितनी ज़रूरत है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। भारत में महज 0.33 मिलियन टन मशरूम का ही उत्पादन हो रहा है, अगर हम 2024-25 का रिकॉर्ड देखें।
और भारत में पर हेड 100 ग्राम से ज़्यादा मशरूम का एक आदमी के ऊपर प्रति व्यक्ति नहीं आ पा रही है। और विटामिन डी का ये बहुत प्रमुख और बेहतरीन सोर्स है और कई तरह के पोषक तत्व मशरूम में पाए जाते हैं और इसलिए मशरूम आपकी डाइट में शामिल हो। अगर आपने इस ज़रूरत को समझा है और किसी तरह का कोई स्मार्ट काम आप भी खेती में करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती। भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारियों ने देश ही नहीं विदेश में भी जाकर अपार कष्ट सहन किए और भारत की स्वतंत्रता की अलख जगाई। ऐसे ही एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे पांडुरंग सदाशिव खान खोजे, जिन्होंने यूरोप, अमेरिका, सोवियत संघ, जापान और चीन में जाकर अंग्रेजों के साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए संगठित मोर्चा तैयार किया था। पांडुरंग खान खोजे का जन्म 7 नवंबर 1883 में महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद वर्धा से वे नागपुर चले गए। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक से वे बहुत प्रभावित हुए थे। वे तिलक की सलाह पर जापान पहुंचे ताकि पोर्ट आर्थर में रूस पर जापान की जीत की रणनीति की जानकारी मिल सके। उन्होंने चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति सन यात सेन से बातचीत के दौरान कृषि के महत्व पर भी ध्यान दिया। पांडुरंग की बेटी सावित्री ने अपनी किताब रेवोल्यूशनरी वर्क पांडुरंग खान खोजे एंड टीना मॉडेटी में खान खोजे की जीवनी लिखी है। बात उस वक्त की है जब अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर भूकंप से पूरी तरह तबाह हो गया था। उसे फिर से बसाने के लिए मजदूरों की जरूरत थी। पांडुरंग खान खोजे मजदूरों के साथ पानी वाले जहाज से अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने होटल में बर्तन धोने, वेटर का काम करने और अस्पताल में सहायक का काम किया। इन कार्यों से मिले पैसों से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में कृषि की पढ़ाई की। 1910 में उन्हें कृषि विषय पर ही डॉक्टर की उपाधि मिली। अंग्रेजों से सशस्त्र संघर्ष के लिए उन्होंने माउंट टैमालपैस सैन्य अकादमी में हथियार चलाने का पूरा प्रशिक्षण लिया। इनके अमेरिका पहुंचने का मूल उद्देश्य दरअसल यही था। खान खोजे पंडित कांशीराम और सोहन सिंह बखाना को साथ लेकर स्टैमफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लाला हरदयाल से मिले। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का प्रहार विभाग खान खोजे के हाथ में था, जो क्रांतिकारियों को बम बनाने और पिस्तौल चलाने आदि का प्रशिक्षण देता था। पहला विश्व युद्ध शुरू होते ही अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारी दूसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी गुटों से सहयोग करने लगे। गदर के कार्यकर्ता ब्रिटिश सेना में असंतोष फैलाने लगे। गदर को जर्मनी और तुर्की से सहयोग मिला, जिसे अंग्रेजों ने हिंदू जर्मन षड्यंत्र नाम दिया। जर्मन सेना मध्य एशिया से भारत की तरफ बढ़ने लगी। जर्मन सेना के लीडर विलहेल्म वासमस से मिलकर खान खोजे ने एक फौज तैयार की ताकि बलूचिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुआ जा सके। खान खोजे की अंग्रेजों के साथ हुई मुठभेड़ में उन्हें गंभीर चोट भी आई। बगदाद और बुखारा में उन्होंने अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ जगह जगह पुस्तकें और पर्चे बांटे। वस्त में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। वे घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए।
कुछ दिन के बाद वे ठीक हुए तो शिवाजी के जेल से भागने की घटना और सावरकर के समुद्र में कूदने की घटना को याद कर खान खोजे ने जान पर खेलकर अंग्रेजों के जाल को किसी तरह से काट दिया और भाग निकले। यह एक बड़ी घटना थी जिससे ब्रिटिश शासन व्यवस्था हिल गई। इस बीच अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में गदर क्रांतिकारियों